morning. So Good morning. I'll take this lecture remotely, which means we are doing this. Just a second. Hello. मैं ऑलरेडी हूँ Zoom 9 में मैडम. अब आप फिगर आउट करके आ जाना. मैंने चालू किया लेक्चर. So hi, good morning. So I'll be taking this lecture remotely, and we'll do it on Zoom. So all those guys who are at Kharghar branch and attending this lecture, I'll be taking maths ka topic. So I want you guys to occupy as close a seat as possible to the monitor, to this TV. So who all are there? Let me see. Sara Das hai ye ya Mohani Varshini hai? She is Varshini. Okay. आगे आ जाओ. And who is that? Abhyuday? Yes, sir. हाँ, Abhyuday. ठीक है. So आगे आके बैठो. And then I see Sahas Chauhan. So due to some, I think, technical issue, it took some time for all of us to log in. So I see Sarvartra there, Chinmay, Sahas. Okay, ठीक है. And then there is ये Zoom coordinator होंगे. Maybe I think Meena is there. So ठीक है guys. So what I will do is, now this has taken some time. I'll take a couple of minutes more, and we will start. I'll also join in through my working space, ताकि वो जो whiteboard आपको physically दिखता है वो screen पे भी दिखे. So have patience. I'm doing all that, and then we'll start quickly. Just couple of more minutes. So hi, good morning once again. So मैं वापस एक quick roll call कर रहा हूँ. So Sara Das and Varshini is there, and then ये Abhijit है, right? Abhijit or Abhyuday? Abhyuday, sir. Abhyuday. Then Sahas is there. Sarvartra दिख रहा है मुझे. Chinmay, Nilanjan. Nilanjan, is this your first class? No, sir. Second class? Yeah. Okay. So we are meeting for the first time? Yes, sir. Okay, ठीक है. Then Kshitij Mittal is there. Pushpalata Rekha. Kim is there, and Ishan Arekar. So Ishan का भी first class नहीं है. I know him. Kim का ये first class है. Okay. So Ishan and Kim, you need to put on your videos. People who are attending this from Kharghar classroom. So Sarah, I just announced you were not there. See if you can occupy the first row in the class, Sarah. And उससे क्या होगा कि I'll be able to hear you clearly in case there is some questions. Maths, mostly you will see lectures would happen physically, but there could be some lectures where we'll take it remotely, like the one you are having today, which is chapter 5. आपके पहले 4 chapters physically हुए थे खारघर branch से. 5th वाला is happening remotely.
I can tell you आगे आने वाले lectures 6, 7 and 8 as we have planned, all this will happen physically from Kharghar branch. ये एक lecture remotely हो रहा है. Okay, and Ishan would take some time. Kim, you also need to put on your video. That is must in this class, so do that. And Kim, since you registered only yesterday, I think, or maybe this morning, so you may not be having your maths ka book. Am I audible, Kim Mohite? Can you please unmute and give me a confirmation? Okay, maybe confirmation will come. So ठीक है, अभी मैं बात नहीं करता हूँ फिर Kim से. So guys, we start today and आपने chapter 4 कर लिए हैं. We go to chapter 5 today, and I see some of the students are not there. For example, एक सारा नहीं है, वो आईरोली वाली सारा नहीं है, ये वाली सारा है, and बिजी भी नहीं है. Okay, and then rest all of you are there. ठीक है. So we start this. What you have to do, people who are at Kharghar, you don't have to worry. आइडियली अपने आप स्पॉटलाइट पे या तो मैं दिखूंगा जैसे अभी वैसा करते हैं ताकि वो सबके लिए हो. So yes. Okay, so now you know I'm centrally visible on your screen, right guys? Right, Chinmay, Nilanjan? Yes, sir. And my Kharghar team. So right. So what will happen is I'll give you some references from your book in case you have book with you, which most of you will have. Nilanjan, do you have book with you? Yes, sir. Great. So I'll give you question ka reference. You'll have to solve questions from the book. In case you don't have book, which I think is the only case with Kim Mohite right now. So the question I'll try and yes, hi Kim. So I'll try and share those questions on the screen. But before next Saturday, Kim, you should be able to get your book. And if it is convenient for you to pick book from any of the nearest UT branch, do let us know at the end of the class. तो हम क्या करेंगे, Monday, Tuesday में वो books वहाँ पे पहुँचा देंगे, and by Wednesday or so you can collect books from there. English and Maths का book वो branch पे चला जाएगा. I think Koperkhedne is closest to your place, right? So we will send it to Koperkhedne, UT Koperkhedne, and you can pick it from there. So पुष्पलता, रेखा, आप लोग ये नोट कर लो, किम मोहिते का मैथ्स का बुक खारगर हेड ऑफिस से कोपरखेड़ने भिजवाना है, so that she can pick it by Wednesday. कौन लिख रहा है, रेखा पुष्पलता में से? लिखा रे, पुष्पलता ने लिखा, ठीक है, okay. तो चलो guys, so this is how we will do it. I'll be there as spotlight on your screen, and when required I will switch the screen, and then you will see my working space. देख रहा है ना ये सब? हाँ सारा दास? Yes. Okay, so this is how we will do this, and we have a very interesting topic today. The topic is called भाई रेखा या पुष्पलता, ये वेटिंग रूम में कुछ लोग हैं, आप लोगों को देखना है. आई एम नॉट कीपिंग अ वॉच ऑन दैट, सो ये सब आपको देखना है. अगर वो आपको स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं दिखता है, एंड इफ देयर इज अ न्यू एंट्री, डू स्टॉप मी और मुझे बताना दैट यू डोंट नो दिस गाय एंड इस बैच में वो नहीं है. ओके, तो मुझे वहां पे रोक लेना. Okay. ठीक है. So guys, we are doing chapter 5 today, and this chapter 5 is an interesting chapter. Why do I say that? Because it has two topics here. There is something called as an absolute value का concept, mod concept जो हम आज करेंगे. It has that, and then it also has something called as complex numbers. Some complex numbers भी करेंगे. Now, if you ask me how many questions are expected out of this chapter, so एक question आएगा complex number से, one and only one, and there should be a couple of problems minimum from absolute value. Now, since you guys did inequalities in the last class, absolute value questions could come either mixed with inequality problems, or they could be pure absolute value problems, मतलब problem solving, data handling वाले types, or even the word problem types. So 2 plus 1, I expect out of 58, there should be 3 problems that you should encounter on your SAT day from what we are doing or what we are discussing today. So minimum ना 3 questions तो आने चाहिए. तो सबसे पहले let's start with absolute value.
और मॉड वैल्यू जैसा आप लोग इसको जानते हो। तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कॉन्सेप्ट पे चालू करते हैं सबसे पहले। I will do 15 minutes of theory round, then we go and solve all possible problems type that we may encounter on SAT. Then I'll go to complex number, we'll do a 15-minute ka theory round and then solve complex number ke SAT wale questions. So this is my plan. So good to go. Chavan sahab, चालू करें? Yes. Okay. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और जो खारगर में लोग हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वो टीवी में क्लियरली नहीं दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू लेट मी नो। So I may go slow or I may make some alternate arrangements. Of course, I'll not be able to come physically there, but I'll try and help you out. Chalo. So we start on this note, absolute value. Who is going to define absolute value? कौन एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे लिए डिफाइन कर रहा है? हाँ, चलिए मित्तल साहब, go ahead. Absolute value means how far a number is from zero. Like, So you have to be loud. इतने सालों से पढ़ा के ना, I have gone on the deafer side of the population. जो डेफ हो जाते हैं ना लोग, वैसा हो गया हूँ मैं। जोर से बोलो। absolute value का मतलब when a number, the difference between the number and zero. Like on the number line, how far is a number from zero? How far is that number from zero? Huh. That's what you're saying. On a number line, absolute. So how he's defining, how Kshitij Mittal is defining is basically absolute value of a number means how far is that number on a number line from zero. So wo jo magnitude hai distance ka, that is how absolute value is defined. And I think this is a good definition. Thank you. Any other definition? Any other way you would want to define? So yes, there's nothing wrong. But is there any other way? Technically, colloquially, commonly, as you understand, maybe bookish, may not be bookish. Okay. So एक ही आ रहा है मुझे लग रहा है definition, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है. Common definition is if it's negative, then whatever it's positive values, and for positive it is same. Okay, so absolute value is type of a function. सर्वत्र नारंग के definition को मैं थोड़ा सा improve कर रहा हूँ. Absolute value is actually a function which will return a positive value. The input could be a negative value or positive value. It will always return a positive value. Okay, so sign हटा के आपको positive value ही देगा. That's how सर्वत्र is defining absolute value. तो चलो, अब इसको ना थोड़ा सा ये जो दोनों definition है, what Kshitij said and what Sarvatra said, let's try and put it into an equation form. So guys, absolute value would you will see कि एक तरह का function है, and this function is denoted by two straight lines, and there are some expression variable entities between these straight line, and straight lines के बीच में कुछ तो लिखा होगा, and it will always return पॉजिटिव वैल्यू. जैसा सर्वत्र ने बोला या फिर जैसा क्षितिज बोल रहा था कि अगर ये नंबर लाइन है, वॉट एवर इज द थिंग हियर, हाउ फार इज दैट थिंग फ्रॉम जीरो, वो ये रिटर्न करता है. तो इसको टेक्निकली इट इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, समथिंग दैट इज विदिन द स्क्वायर लाइन इज डिफाइंड एज दिस विल बी इक्वल टू एक्स if x is greater than or equal to 0, or this will be equal to minus of x if x is less than 0. So please absorb करो इसको जो मैंने लिखा है, और ये देखो कि ये सही लिखा है मैंने, ये समझ में आ रहा है क्या? So if x is less than 0 guys, you basically are doing a sign change. Negative of negative positive बन जाएगा. If x is greater than or equal to 0, you don't do anything. You write x as it is. This is how absolute value is defined. बोलिए, क्या ये एक छोटा सा पार्ट क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes. So, if you guys understand, and I'll pick Kshitij's definition to build a concept on this. The absolute value, मैं फिर बोल रहा हूँ, if अंदर का thing is positive, you write as it is.
If अंदर का thing is less than 0, then you do a sign change, which is negative of negative, positive बना के उसको आपको यहाँ पे लिखना है. So this is what absolute value would mean. Now any value, क्योंकि मैंने इसको बोला this is a type of function. Function हम आगे पढ़ेंगे, but अभी के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. If this is a type of function, function मतलब माइक्रोवेव ओवन समझ लो, ये फंक्शन है. There will be some inputs going into it. आटा, मैदा, बटर, शुगर, बैटर वो पूरा बन के एंड एग योक वो सब उसके अंदर जाएगा. माइक्रोवेव ओवन के अंदर फिर कुछ हो रहा है एंड देन यू गेट एन आउटपुट एंड यू नो व्हाट आउटपुट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो यू गेट दैट आउटपुट. सो एब्सोल्यूट वैल्यू भी एक फंक्शन है वेयर you know all that goes as input is called domain, and all that you get as output is called range. तो ये कैसा होता है ना, ये आपको मैं समझाने के लिए इसको और हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं. तो ये कैसा होता है, इनपुट और x और डोमेन as we call it guys, this can take any value between negative infinity to positive infinity. जबकि जो इसका आउटपुट है जिसको आपने रेंज बोला है, जो बन के जो केक बाहर आ रहा है, that can take value between 0 to positive infinity. ये वही डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर लिखा है, बस मैंने इसको फंक्शन के टर्म्स में लिख दिया. फंक्शंस एंड रिलेशंस करके एक चैप्टर आता है 11 CBSE मैथ्स में. आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव स्टार्टेड. जिसने स्टार्ट किया होगा वो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा होगा, नहीं तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ये जब हम फंक्शंस वापस पढ़ेंगे, एसएटी में भी आता है ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट इज चैप्टर 10 और चैप्टर 11. व्हेन यू डू दैट तो हम वापस फंक्शंस पे आएंगे. बट अभी के लिए दिस इज हाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट minus infinity to plus infinity, anything can go from negative to positive, but you will always get a value which will be between 0 included. इसलिए मैंने ऐसा वाला ब्रैकेट बनाया है to infinity, क्योंकि infinity वैसे डिफाइन नहीं होता है, तो मैंने वो स्क्वायर सेमी सर्कल वाला ब्रैकेट बनाया. बोलो, am I making sense? ठीक है वर्षिनी? ओके, तो डू रेज योर हैंड. मैं एटलीस्ट खारगर वाले स्टूडियो को मैंने ना पिन कर रखा है, तो आप तीनों तो मुझे दिख ही रहे हो. कोई और कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं वो लोग. इफ दे आर गिविंग सम आंसर्स तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल टॉक टू यू गाइस देन. तो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू इज, और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो इफ आई टेल यू फॉर एग्जांपल, लेट्स से मॉड ऑफ y यू नो इज लेस देन 10. मान लो मैंने आपको ऐसा बताया, mod of y is less than 10. Let's say if I have to plot, the hold on. Why am I only working with black? So let's say I have to plot the domain of it. What are all possible values that y can take? Anyone? y क्या क्या values ले सकता है अगर ये हमेशा true होना है तो? Y can take any value between minus 10 to plus 10. बोलो, है ना? But Y cannot be equal to minus 10 and Y cannot be equal to plus 10. सारा अभ्युदय बोलो, समझ में आ रहा है? नीलांजन, Y 10 नहीं हो सकता. क्योंकि अगर Y को 10 रखा तो mod of 10 is 10 and 10 is not less than 10. Y minus 10 नहीं हो सकता because minus 10 का mod होता है 10 and this is not less than 10. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन बोला था ना क्षितिज ने, मैं वही बना रहा हूँ. नंबर लाइन पे मैं हॉलो सर्कल्स बनाऊंगा और इसको जोड़ दूंगा. तो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखे, इट मींस y can take any value between minus 10 to 10 but both are not included. अगर ये included होगा तो सॉलिड सर्कल्स बनाना, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्कल्स बनेंगे. लिमिट्स आर नॉट इंक्लूडेड. और इसका रेंज अगर बनाना है तो कैसे बनेगा? रेंज वुड बी, चलो मैं रेंज को प्लॉट करता हूं नंबर लाइन पे. ये स्नेहित को ले लो भाई क्लास में, वो है इस क्लास में. ये पूना से आता है तो लेट हो गया होगा. लेट मी टॉक टू दिस गाय फर्स्ट. एक मिनट. हाँ गाइस, Snehit, can you please put on your video? Why are you late?
स्नेहित कैन यू हियर मी? ये अच्छा है ऑनलाइन में, जल्दी से ऑडियो कनेक्ट नहीं होता है, वीडियो कनेक्ट नहीं होता है। जल्दी करो स्नेहित। हाँ, लेट क्यों हो गए तुम? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारे देखो पीछे घड़ी दिख रही है मुझे, उस पर 12 बज रहे हैं। 12 बज गए क्या उसमें? हाँ, ऑलमोस्ट 12 बज गए। सो यू आर लेट बाय 25 मिनट्स स्नेहित। व्हाई? गिव मी अ गुड रीजन, अच्छा रीजन दो। संडे था, लेट उठे तुम, यू आर लेजिंग अराउंड स्नेहित। यस सर। चलो ठीक है, ये एक अच्छा ऑनेस्ट रीजन है। अच्छा तो नहीं है, सॉरी, ऑनेस्ट रीजन है। मैं इस बार परमिट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आने दूंगा तुमको क्लास में, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। रिप्लेस। सो अगर मुझे अब इसका रेंज प्लॉट करना है, रेंज कैसा बनेगा? लेट्स से मैं वो रेड से कर रहा हूं। रेंज वुड बी 0 इंक्लूडेड होगा all the values that you get as an output to this thing. बोलो। Yes. क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, बिकॉज y कैन बी 0 और एक 0 आउटपुट आ सकता है। रेंज मतलब आउटपुट, 0 आउटपुट आ सकता है, तो मैंने उसको सॉलिड सर्कल बनाया है। आउटपुट 10 नहीं आ सकता, नहीं तो आपकी इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगी। So this is how you plot things on number line. Now why have we done that? यहां से क्वेश्चन टाइप चालू होता है। This is one of the first skills that you will be tested if you would be tested on absolute value. ये एक type of skill आ सकता है where they may ask you to do a plotting. Of course, not do it manually क्योंकि subjective paper नहीं है. So there could be an equation, an expression, an inequality given to you. And you may be asked to identify among the 4 plots which is the right plot. There could be a big word problem given to you, और वो word problem का solution number line पे plot करके उन्होंने दिया होगा, और 4 number lines होंगी, एक उठाना होगा, and you will have to find out which number line is giving you the solution. Okay guys, तो ये पहला type of question है, और बहुत अच्छा सा concept है, बहुत easy scoring सा concept है. So I am going. So you may be thinking कि कितनी छोटी-छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये तो सब आता है, but in SAT things becomes tricky, इसलिए I am going very slow and I am building it from basic. So this is a first type. Some of the questions may be of this type. So this is one skill which you must understand. एक तो इसका definition क्या है, तो आप लोगों ने जो बताया that understanding is correct. दूसरा, how it is plotted. So how it is plotted पे there could be some questions. Any questions? Nilanjan? All good? Chinmay? No problem. ठीक है. Kim, you are following this? ठीक है. You are not there in inequalities वाला part, so I will try and touch upon inequalities जो last week उदय सर ने लिया था, wherever required for the questions that we will do today, हम वो touch करेंगे. And Ishan, I hope things are clear to you. मैं आगे बढ़ता हूँ. चलो अब इसमें ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं। एंड अगर आपको मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है तो उसको पिन कर लो सो दैट वो दिखे, अदरवाइज मैंने उसको स्पॉटलाइट में बना रखा है। सो आई गो टू द नेक्स्ट टाइप एंड आई चेंज माय कलर हियर। So how do you solve and what do you do, you know, when you have to solve? So I am doing something called as rules to solve absolute value problems. अब एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉब्लम्स गाइस दो कैटेगरी में आ सकते हैं आपके पास। एक कुड बी इन्वॉल्विंग इक्वेशंस, दूसरा कुड बी इन्वॉल्विंग इनइक्वेशंस, ये वाला या ये वाला या ये वाला ये वाला, ये ऐसा वाला कुछ टाइप का हो सकता है। जब वो इक्वेशंस के साथ है या वो इनइक्वेशंस के साथ है, in either of the case, I think to solve this with practice you will be able to do it mentally, but till that time I think if you follow three-step process, your chances of making a mistake would become 0. high accuracy के साथ काम कर पाओगे आप इसमें। तो समझने की कोशिश करते हैं what do I mean। so अगर वो इक्वेशन के साथ है या इन इक्वेशन के साथ है, तो मैं ऐसी एक एग्जांपल लेता हूँ। let's say y plus 3 guys is less than y plus 3 is less than, अच्छा equal to के वाला लेना है, is equal to, let's say is equal to 10।
तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आइसोलेट all inequalities on one side and everything else on the second side. Interestingly, ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया है इसमें ऑलरेडी थिंग्स आर आइसोलेटेड. इनइक्वालिटी आपके लेफ्ट हैंड पे है और इक्वल टू के, और बाकी सब राइट हैंड पे. तो ये तो हो गया. आफ्टर यू हैव आइसोलेटेड, माय सेकंड स्टेप वुड बी डिवाइड द स्पेस दैट यू हैव इनटू हाफ्स. 2 हाफ्स में डिवाइड करो. एक हाफ बनाओ ये वाला, ऐसे बन गया, बस एक लाइन बना दो और कुछ नहीं करना है. टेक अंदर का पॉजिटिव y+3 को पॉजिटिव इक्वल टू 10, एक ऐसे इक्वेशन के साथ सॉल्व करो. दूसरे में अंदर वाले को नेगेटिव माइनस ऑफ y+3 इक्वल टू 10. 2 हाफ में डिवाइड करो. एक में अंदर वाला पूरा पॉजिटिव लेके सॉल्व करो, एक में पूरा अंदर वाला नेगेटिव लेके सॉल्व करो. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, y इज इक्वल टू 10 - 3 7. दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज. इसको -1 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट. सो आई हैव y+3 इज इक्वल टू -10 और y इज इक्वल टू +3 को उस साइड लेके जाओ, सॉरी उस साइड लेके जाओ -13. So these are 2 possible values of y for which given equation will be satisfied. Righto, Sneha, Sahas, Mittal साहब बोलो. Yes, sir. इसी चीज को करते हैं. अगर मान लो y+3 लेस देन 10 होता, लेस देन इक्वल टू होता या लेस देन होता, कुछ भी ले लो, चलो लेस देन इक्वल टू लेते हैं. आइसोलेट ऑलरेडी इट इज आइसोलेट है. इनइक्वालिटीज में आइसोलेशंस का ध्यान रखना. जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी पे ले जाते हो, -1 या -1 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो, सारे रूल्स आपको बताए होंगे सर ने, वो सब रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा. तो या डिवाइड द स्पेस. अंदर वाला पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 10, अंदर वाला नेगेटिव y+3 लेस देन इक्वल टू 10. पहले अंदर वाला पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं गाइस. ये बहुत ही ओवर हो गया इसका कलर. आई चेंज द कलर. सो दिस becomes y-3 added to both sides. So I'll have 10 - 3 7. In this case, -1 multiplied on both sides of an equation. So Nilanjan, you will know this. मुझे बताओ what happens when I multiply -1 on both sides of an inequality. Sir, this sign will be changed. Sorry, Nilanjan. Sir, the middle sign will be changed. Yes, the sense of inequality will change. तो अगर मैंने -1 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा y+3, ये पॉजिटिव हो जाएगा. सेंस ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर देना, वो लेस देन इक्वल टू था उसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना, और -1 मल्टीप्लाई किया था तो इसको -10 लिखना मत भूलना. Now subtract 3 from both sides, so I'll have y greater than or equal to -13. So now if I solve this, इसका रेंज आएगा y is greater than or equal to -13 but less than or equal to 7. ये इसका सॉल्यूशन सेट है. इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा, आपको एक सॉल्यूशन स्पेस मिलता है. इक्वेशंस में आपको सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको या एक वैल्यू मिल जाता है इक्वेशन में, यहाँ पे यू गेट एंटायर स्पेस where there can be many points that become your solution set. So this is how you solve absolute value questions. So ये मैं second skill बोलूंगा जो absolute value के लिए important है, which is solving. पहला वाला skill क्या था भैया? Representing absolute value को on number line. Second skill that is required, solving, and this is how you solve. बस that's all from SAT's point of view. अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो 2 मिनिमम, and if you're lucky 3 सवाल आने चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू से. You should crack all 3. बोलो, ये सब समझ में आया? Can we go to SAT type and SAT वाले problems on absolute value now, guys? Yes. This is all I think. I don't think there's anything else. बाकी सब हम मैनेज कर पाएंगे अगर ये बेसिक चीजों को हमने ध्यान में रखा. अब जितना भी ट्रिक्स और कॉम्प्लेक्सिटीज आएगा, दैट वुड कम व्हेन वी आर डूइंग प्रॉब्लम्स, तो उस समय बात करेंगे. बट स्किल्स क्या चाहिए? यही 2 स्किल्स चाहिए. उसको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए और उसको सॉल्व करते आना चाहिए. तो आई विल क्विकली गो टू माय गैलरी. क्षितिज मित्तल हैज अ क्वेश्चन. 1 मिनट समझिए. एंड आई एम देयर ऑन योर स्क्रीन नाउ. आई होप आप सिर्फ मुझे देख पा रहे हो. बोलो मित्तल साहब, लेट्स हैव योर क्वेश्चन. Sir, so you wrote 3 steps to solve.
and then you only give 2 steps. After the 3 steps to solve. I'm very sorry, Shadid. नहीं सुनाई नहीं दे रहा मुझे. Sir, you said 3 steps to solve the inequality, no? For absolute value, and then you give only. हाँ. तो third step ना मैंने यहीं पे मिला दिया. रुको. That's a good point. So you were listening to me. रुको. The third thing is yes. तो मैंने आपको वहाँ लिखा divide it into 2 halves, and third वाला is yes. This is the third thing that I wanted to tell you. So you divide it into 2 halves and solve. And in case of, this is the third step is only applicable when it comes to inequalities. So this is the third case. In case of inequality, I want you to take care of sign change. I want you to take care of sign change. ये सबसे error prone area है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, inequality का sign change कर देते हैं, इसको -10 लिखना भूल जाते हैं. कई बार इसको -10 करते हैं, but ये करना भूल जाते हैं. तो inequality में please pay special attention. So your third step is when you're talking about inequality, take care of sign changes inequalities में. And rules वही है जो आपने last class में उदय सर के साथ. If you are adding same quantity both sides, no change. If you are subtracting both the same quantity both sides, no change. If you are multiplying by a positive quantity both sides, no change. If you are multiplying by a negative quantity both sides, sign change. If you are taking reciprocal of both sides, sign change. है ना? नहीं. ये एकदम बहुत बहुत सन्नाटा था क्लास में. सारा दास, ये सब समझ में आ रहा है? Varshini, is this sounding Greek and French? Nahin, na? This is clear, right? You have a question for me? No. So this is, if you're finding it ye easy hai, to ye easy hai. And if you're finding it difficult, then let me tell you ye easy hai. This is not difficult. So आगे चलते हैं. आगे बढ़ें? Okay. So what I will do is I will go random in your book, like I always do. We'll pick some questions and we'll try and build. Easy वाले करेंगे, but mostly SAT वाले करेंगे, and then उससे difficult करेंगे, और फिर उससे difficult करेंगे, और फिर कुछ challenge problems करेंगे. And once we are done with this, जो कि हो जाएगा ये फटाफट, उसके बाद we go to complex numbers. Complex number मैंने आपको बताया, in my experience 2016 से देख रहा हूँ मैं, especially SAT papers तो ये 5-6 साल में एक क्वेश्चन आता है, और exactly एक क्वेश्चन आता है complex numbers का, और बहुत इंट्रोडक्टरी आता है. अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है अभी 11th में तो वेल एंड गुड. नहीं पढ़ा है तो डू नॉट वरी. इवन इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, इज देयर अ कॉमर्स स्टूडेंट, नॉन मैथ्स नॉन साइंस वाला कोई है? प्लीज रेज योर हैंड. नो वन. ओके. तो 11th का जो बेसिक है ना, बहुत बेसिक वाला आएगा. वी विल डू इट देन. सो आई वांट यू टू सॉल्व नाउ. बुक में आ जाओ. एंड किम, यू वोंट हैव बुक, राइट? एवरीबॉडी एल्स हैज. ईशान, बुक है तुम्हारे पास अभी? Yes, sir, I am. तुम खारघर से अटेंड करते हो ना क्लासेस, ईशान? Yes, sir, I have done today online. आज घर से कैसे? Sir, due to shifting. Shifting at your place. Yes, sir. ठीक है. So I want you to solve. रुको, सबसे पहले 1 मिनट रुको. मुझे क्या करना पड़ेगा? For Kim, I will also share questions. So Kim, only for you questions will appear on the screen. बाकी सब अपने बुक में देख सकते हैं या स्क्रीन पे देख सकते हैं. 1 मिनट, मुझे वो ऑन करने दो मेरा सिस्टम. Guys, I want you to start with question number 3. बहुत छोटा सा तरीका है इसका. पहले मेथड सुन लो. All those who are attending online, privately chat box में जाके आपको मनीष सराफ दिखेगा, वहां पे एक नाम, उसको आंसर भेजना, टाइप करना, पर प्राइवेट मैसेज करना. एंड माय खारघर टीम, व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यू विल जस्ट हैव, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिन कर रखा है, यू जस्ट रेज योर हैंड. आप तीनों में से मुझे दिख जाएगा किसका हो गया, एंड देन आई विल इनवाइट यू फॉर शेयरिंग योर आंसर. सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1. एंड किम, फॉर यू द क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन. दिख रहा है किम मोहित? Yes, sir. Okay. चलो, go ahead guys. Question number 3 पे जाते हैं, and let me give you people 30 seconds, 45 seconds. Please solve. Real SAT problem, calculator allowed but not required. Allowed is question.
Send me your answers privately. And for Khargar people, you'll raise your hand. Chinmay and Sahas, answer is correct. Very good. Come on, Kshitij, Snehit, Sarvatra, Saradas, Varshini, Abhyuday. Then mod of x plus y could equal each of the following except. I hope you have noted that except. Ishan, I want you to do this once again. Check karo apni working ko, kya gadbad kiya hai, please try and identify, then I will discuss. अच्छा, किसी से एक से भी नहीं होगा तो मैं इसको करूंगा, don't worry that way. Bolo guys, what happened? Okay, I have some more answers. Nilanjan, once again, look into your steps, check karo, recheck karo. So मैं stop share कर रहा हूँ. Kim, you have noted the problem. Can I stop share? So the question says twice of mod of x plus 3 is equal to 4 and mod of x plus 1 divided by 3 is equal to 2. They want to know values of x plus y. It can take many values, but mod of x plus y can be all of them except. That's what the question is. So Ishan nahi, abhi nahi aaya right answer. Kshitij correct. So how is it at Khargar? Bolo, Saradas, what do you say? Sir, it can't be D. Answer is D. Okay. Varshini? D? A, B, C, D में से कौन सा आंसर है? C. D for dog. D for dog. Okay. And Abhyuday, what say? I didn't get it. You think I should do this? Yeah. Correct, Sarvatra. But you know, बहुत सारे बच्चों का ये सही नहीं हुआ है. So what we will do is, मैं मेरे whiteboard पे जा रहा हूँ, and I want one of you to lead me. Who's going to lead me and help me solve this? ये question है. बोलो भाई, who is doing this for me? So between Sahas and Chinmay, I'll pick one. Sahas, John, you go first. Yes, sir. So you help me, बेटे आप मुझे steps बताते जाना. मैं whiteboard पे वैसे ही solve करूँगा. Go ahead. Sir, first we'll take the first equation. Okay, so we'll take the first one. We are talking about this one first, right? Yeah, so we'll open the board. So I'll isolate. So I'll write this as x plus 3 divided by 2 on both sides. I will get it like this. Divide the space. X plus 3 is equal to 3. 2. Minus of x plus 3 is equal to 2. This is x is equal to minus 1. है ना सर? Yes, sir. And x minus 1 से multiply करो. So x plus 3 is equal to minus 2 और x is equal to minus 5. X की आपको दो values मिल गई. Similarly, I'll do for the other expression. So mod of y plus 1 multiplied by 3 throughout will be equal to 6. So this is y plus 1 equal to 6. Divide करने के बाद या minus of y plus 1 is equal to 6. So ये हो जाएगा y is equal to 5. ये एक value मिला. ये हो गया y plus 1 is equal to minus 6 या y is equal to minus 7. अब
ऑफ द ऑप्शंस कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो एक ऑप्शन था 0, 0 पॉसिबल है क्या? है। Yes, sir. -5 +5, यहाँ पे रखो x को -5, y को +5, क्या आएगा? 0, 0 का मॉड 0 पॉसिबल है, राइट? और क्या ऑप्शंस थे? मुझे ऑप्शंस देखने दो। So four is Four. possible. 4 is -1 possible. and 5. -1 and y को लो 5, x -1, y को लो 5, 4 possible है, okay? Then Sir, 10, even 12 is sorry, possible. 12 possible है. You take x as -5. -5, y is -7, -5, -7, -12, -12 का mod is +12. So C भी possible है. Let's look at D. 10, you do anything you want to. 10 possible नहीं है. Answer है option D. This is not possible. ईशान, ये क्लियर हुआ? अभ्युदय, आर वी मेकिंग? हाँ, से y को ट्राई कर तो फिर आ जाएगा। ठीक है। किम, राइट? सो सर्वत्र, यू डिड गेट इट राइट, बट बेटा आई डोंट नो, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, थोड़ा समय ज्यादा लगा, बट यू गॉट इट राइट, सो दैट्स ओके। Sir, I did a calculation mistake. You did what mistake? Calculation mistake. Okay, okay. So calculation mistake is something which is a very common thing, and this can only be improved with more practice and more hours into it. और कोई तरीका नहीं है उसका। नीलांजन, समझ में आया क्या मिस्टेक की थी तुमने? Yes, sir. तो चिन्मय और सहस ने इसको फास्ट सॉल्व किया था। दिस इज व्हाट विल बी आल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज आप अगर देखोगे 58 क्वेश्चंस करने 80 मिनट्स में, सो यू आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक 1.5 मिनट के आसपास है। सो ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन वो नहीं है जिसमें टाइम कंज्यूम होना चाहिए, वो आगे मैं बताऊंगा वो कौन से हैं, तो ये थोड़े से फास्ट होंगे। ये वाला तो वो क्वेश्चन नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट यू गाइस टू सॉल्व, एंड किम आपके लिए वो आपकी स्क्रीन पे है। For others, the problem number is 4. Question number 4. From your book, find the interval of x. You'll have to send me answers privately. Hold on, says correct. The expression is 3 into mod of x plus 1 minus 8 greater than 7. You have to find interval of x. An SAT type question. Correct, Chinmay. Correct. Yes, Sarvatra, correct. Good. Send me answers privately. Correct. Kim, very good. चलो आगे। I'll talk to you Abhyuday. I can see you have done. मैं भी बात करता हूँ आपसे। कौन बचा? क्षितिज, मित्तल, स्नेहित, ईशान, नीलांजन, करेक्ट। और कौन बचा इधर? That's all. क्षितिज मित्तल, करेक्ट। Who's left now? नीलांजन, आंसर भेजा तुमने मुझे? Yes, sir. I sent. अच्छा, ठीक है। Yes, Ishan, I'll do that. Don't worry. So I go to my Hargar team. Saradas, what say? So C. C is correct. Arshini, C, sir. C for cat, right? हाँ. Abhyuday C. Yes. So ये सबका right है, but Ishan, you want me to solve this, ठीक है? So let me talk to you, Ishan. So दो तरीके हैं. अगर सबका राइट है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बट अगर कोई एक भी चाहता है कि उसको सॉल्व करना है और यू स्टिल वांट मी टू सी, यू वांट टू सी कि मैं कैसे करूंगा इसको, सो आई विल डू इट। नाउ ईशान, आई वांट टू नो अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम, बताओ मुझे प्लीज।
Put your video on, talk to me. बोलो ईशान, कहाँ अटक गए आप इसमें? ईशान, you there? Unmute and talk to me. नहीं हुआ ये क्वेश्चन? No, sir. अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, अभी ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू हेल्प मी सॉल्व दिस. चलो कोई मुझे, नीलांजन तुम हेल्प करो, ये डिक्टेट करो. क्वेश्चन क्या था? 3 times. Yes, sir. 3 times Mod of x plus 1 minus 8 7. चलो ईशान, quickly, what is the first thing you will do? Opening the mod. So you will isolate inequality on one side and everything else on the other side. So what I will do, Ishan, is I will add 8 on both sides. If I add 8 on both sides, अगर मैं इधर भी 8 add करूँ और इधर भी 8 add करूँ, so this minus 8 would go and this will become 3 times x plus 1 greater than 15. Because I am adding same quantity on both sides, I need not worry. I will divide by 3 both sides. यहाँ भी 3 से divide करो, यहाँ भी 3 से divide करो. So I'll have x plus 1 greater than 5. Now, अब सब वैसा हो गया, divide the space. X plus 1 greater than 5 and minus of x plus 1 greater than 5. This will be minus 1 करो both sides. X greater than 4. Minus 1 से multiply करो both sides. X plus 1 less than minus 5 और x less than minus 6. So इसका interval कैसा हो गया? इसका interval हो गया x is less than minus 6 or and x is greater than 4. तो नंबर लाइन पे कैसा दिख रहा है ये? मान लो ये -6 है, यहाँ कहीं 0 है, ये 4 है. ये वाला पूरा रेंज है x का. बोलिए ईशान. Got it. चलो guys, we move to next problem. I want you to solve question number 6 on your book. Question number 6 करना है आप लोगों को. करेक्ट क्षितिज मित्तल, आप में से कुछ लोग शायद वो आगे करते जा रहे हैं बिकॉज मैं दूसरों से डिस्कस कर रहा हूं एंड आई डोंट माइंड इट. आई थिंक आप ऐसा कर सकते हो. यस, चिन्मय करेक्ट, सहस चौहान करेक्ट, क्षितिज मित्तल करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. ओ हाँ, किम के लिए तो मैंने शो नहीं किया. होल्ड ऑन बेटे, सो सॉरी. A typical SAT type problem on absolute value. Sarvartra correct. Kim, do it once again. देखो क्या गड़बड़ी की है. स्नेहित करेक्ट, नीलांजन करेक्ट. Which of the following number lines represent the solution to this? सॉल्यूशन सेट चाहिए, मतलब रेंज चाहिए, मतलब आउटपुट चाहिए कि x की कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं. आपने जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई एक वैल्यू ले लो रैंडमली. अब देखो उसमें पुट करके उस इनइक्वालिटी में क्या वो ट्रू होगा. मतलब यू कैन डू अ सेल्फ चेक एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग. चलो ये मैं स्टॉप शेयर करता हूं. किम इसको वापस कर रही है. Can I stop share now? Yes. Okay. Abhyuday, Yes. what say? D. Okay. Yes, Varshni D, sir. and Sara. D, sir. D is correct. D for Delhi is correct. अब आप मुझे बताओ, how many of you want me to? Yes, Kim, this is correct now. Is there anyone who wants me to solve this? I'll solve this. Ishan, ये हुआ आपसे? Yes, sir. A typical SAT ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है. ठीक है. So
if there's no one who wants me to solve this, we go ahead and we solve the next problem. नहीं तो आप मुझे रोक सकते हो. Now I want you guys to solve question number, the beautiful problem. Question number 8 solve करो please. On your book, question number 8. मुझे privately भेजना. मैं अभी show करता हूँ screen पे. Here you go. Question number 8. Search on correct. Kshitij, I want you to solve this once again. Look into your working. एक छोटा सा mistake किया है तुमने, तभी आया है वो आंसर. आपको निकालना है mod of b minus a. Yes. Now it is correct. तो ये होगा. क्षितिज बहुत ध्यान से करना है. I understand it's about speed, but at the same time it's also about accuracy. Yes. Kim correct, Sarvatra correct. Nilanjan once again same mistake जो ये क्षितिज ने किया था. In your hurry you have missed an important point. b minus a का mod निकालना है. निलांजन वापस करो. ईशान waiting. वार्षिनी done? नहीं. Yes, Ishan, correct, Ishan. Sarah, please announce the answer. So B. For Bombay. Abhyuday? A. A. Mohana Varshini bolo. I didn't get it. Very nice. कोई बात नहीं. So this gives me opportunity for that discussion. So ये मैं कर रहा हूँ नीलांजन, अभ्युदय, सारा, नहीं not सारा, वार्षिनी, ये देखो. हाँ, चिन्मय बहुत लेट आया आंसर. ठीक है. तो ये चिन्मय के लिए भी कर रहा हूँ मैं. देखो क्या गड़बड़ी की है तुम लोगों ने, है ना. मैं ये क्वेश्चन पे ही जाता हूँ, यहीं पे करते हैं इसको. I'll try and scribble on the screen itself. ये दिख रहा है आप लोगों को. So it says let A and B be negative numbers. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ा. बहुत ध्यान से पढ़ा मतलब नोट किया. इसमें और कुछ नहीं है. So A and B be negative number such that mod of 2a minus 3 is equal to 5 and mod of 3 minus 4b is equal to 11. What is the value of mod of b minus a? Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो b minus a मैं बार बार बोल रहा हूँ. अभी करते हैं इसको. तो मैं इसको कैसे करूँ, यहीं पे करूँ. ओके ठीक है. I'll try and do it here. So mod of 2a minus 3 equal to 5 को मैं लिख सकता हूँ mod of, ये मैं माउस से कर रहा हूँ. So you'll have to bear with me. ये थोड़ा सा शैबी दिखेगा. 5 एक पार्ट ये आएगा, दूसरा पार्ट आएगा माइनस ऑफ 2a माइनस 3 इक्वल टू 5, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 5. ऐसे लिख सकते हैं ना. सर्च जॉन. सो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 4. एंड ये वाले केस में a का वैल्यू क्या आ रहा है? सॉरी, -1. -1. But I will not accept this value because it says A and B have to be negative. मैं ये वाला value accept कर दूंगा. Similarly, I will solve this. Similarly, I will solve mod of 3. तो इसको मैं लिखूंगा 3 minus 4b equal to 11 and 3 minus 4b is equal to minus 11. माइनस 11 कर देते हैं इसको. तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा ये -8. सो b इज इक्वल टू -2. ओके -2. एंड यहाँ पे क्या आ रहा है b का वैल्यू? व्हाट्स वैल्यू फॉर b हियर? -14 by 4. Some positive value for sure. Again, I will not accept this. I will accept this. अब आते हैं mod of b minus a. Mod of b, so b is -2. Minus of a will be +1 because a is -1. So minus of -1 is +1. इसका mod निकालना है. इसका mod निकालोगे तो ये आएगा -1 का mod, -1 का mod is equal to 1. Answer is B.
राइट? अब मुझे एक बात बताओ, चिन्मय रानडे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन भेजा था आपने सबसे पहले? D. डी। अब इसको मतलब टेक्निकली बताना, इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस विदाउट सॉल्विंग, क्वेश्चन पढ़ के ऑफ द 4 ऑप्शन विच ऑफ द ऑप्शन कैन नेवर बी द आंसर? -1. -1 कैन नेवर बी द आंसर। और यही आंसर ज्यादातर बच्चों ने भेजा, ज्यादातर मतलब जिनका गलत गया। भाई अगर आप मुझे कुछ भी नहीं बताओ और मैं सॉल्व भी नहीं करने दो मुझे, और आप बोलो चलो ये बताओ इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू तो आंसर हो नहीं सकता ना। हाउ कैन मॉड ऑफ समथिंग बी -1 गाइस? Yes. ये तो क्रिमिनल एक्ट हो गया ना कि इसको आंसर भेज दिया। बोलो आ गया समझ में? आगे बढ़ सकते हैं। अ टिपिकल SAT प्रॉब्लम। So we go ahead and now I want you to solve, आपकी बुक में देखो, I want you to solve this problem. This is called challenge problem 1. ये आपके बुक में पीछे की तरफ दिया होगा challenge problems वाला सेक्शन में। Please solve this. You get 45 seconds, less than a minute में solve करना है। And Kim, that's there on your screen. SAT challenge question 1. Yes, very good, Chitij. Very good. That was quick and correct. What is the smallest possible value of x into y? So I thought कि कोई ना कोई तो फंसेगा। Kim, you are my first शिकार of this. Please recheck and then we'll start with you. ये गूगली क्वेश्चन था, मतलब आता है आप लोगों को, बट फंस जाओगे एक छोटा सा मिस्टेक करोगे तो। प्लीज रीडू। चिन्मय सेम फीडबैक, रीडू। यू आर माय सेकंड शिकार। सर्वत्र नारंग करेक्ट, वेरी गुड। इसमें ना ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब नॉलेज का टेस्ट नहीं, आई शुड से इट इज अवेयरनेस का टेस्ट। यस करेक्ट, नीलांजन, चिन्मय नाउ करेक्ट, स्नेहित करेक्ट। ये कौन है? नीलांजन नहीं। किम नाउ इट्स करेक्ट। सहस चौहान करेक्ट। तो जिसने भी इसको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट किया है, यू गाइस गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट। जिसने इसको मेरे बोलने के बाद करेक्ट किया है, you don't get any point and you don't get negative point also. So I go to Khargar team now. एक मिनट रुको, मैं एक-एक करके बात करता हूँ। So I start with Varshini. Varshini, what do you say? Sir, I'm messing up in the last letter in the answer. So there's no answer from you, मतलब A, B, C, D में से कुछ नहीं? I'm still confused. I'm not really Okay, I'll try and help you out. Then yes, Abhyuday. Is it D? A, B, C, D, which? Apple? D. D. You're also one of my shikars today. Yes, Saradas. Sir, A. A is correct. So in case, guys, you have got A in your first attempt, feel free to give yourself 1 point. Class के end में मैं पूछूंगा कितने ये येलो प्रॉब्लम्स जो है ना, चैलेंज प्रॉब्लम्स, आपके कितने पॉइंट्स हैं उसमें। हम शायद 4, 5, 6 करेंगे, तो वी विल सी। यू कीप योर ट्रैक एंड आई विल ट्रस्ट यू। सो अपना ट्रैक रखना। तो चिन्मय, आप अभी अपने आप को कोई पॉइंट नहीं दोगे। किम, आई थिंक आप भी नहीं दोगे, क्योंकि पहली बार में करेक्ट नहीं हुआ, तो अभी नहीं देना है। चलो अब इसको करते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आई गो बैक टू द प्रॉब्लम एंड आई विल सी इफ आई वांट टू, नहीं, आई डोंट वांट टू स्क्रिबल हियर। ये मैं मेरे व्हाइट बोर्ड में करूंगा। मैं लिख रहा हूँ बस mod of 3x plus 6 should be equal to 12. Mod of -2y plus 8 is equal to 30. इसको करते हैं। सहस चौहान को एंट्री दो। So I go to my whiteboard. Mohana, you'll have to look at this and see how do we solve this. So simple है, divide the space 3x, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, 12 minus x minus 6 from both sides,
सो x इज इक्वल टू 2। मैं जहां गड़बड़ी करूं मेरी हरी में मुझे बता देना। 3x + 6 इज इक्वल टू -12 लिख दिया मैंने। 3x इज इक्वल टू -18, x इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगा -2y + 8 इज इक्वल टू 30 एंड -2y + 8 इज इक्वल टू -30। So this is -2y is equal to 22 और y is equal to -11। ये हो जाएगा -2y is equal to -38 और y is equal to 19। बोलो guys, have I solved it correctly? ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव इज कि x और y का मिनिमम वैल्यू निकालो। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, x into y का मिनिमम वैल्यू निकालो। तो आप में से ज्यादा लोगों ने क्या किया कि x का मिनिमम वैल्यू ले लो, y का मिनिमम वैल्यू ले लो और इनको प्रोडक्ट करके मिनिमम वैल्यू दे दो। ऑब्जेक्टिव x का मिनिमम इंटू y का मिनिमम नहीं है गाइस। ऑब्जेक्टिव इज x इंटू y का मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ दैट कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए और कोई एक वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। तो इफ यू लुक एट दिस, इफ आई टेक सो ऑफ दीज 19 मुझे यहां से मिलता है तो ये मैक्सिमम है। आई शुड टेक x में जो मिनिमम पॉसिबल है विच इज -6। सो 19 into -6 आप करोगे, जो भी आता है, क्या आता है ये 9 6 54 11 -114। This is the right answer. This is what SAT will test you. Varshini, is this thing clear? Yes, sir. ठीक है, क्षितिज प्लीज गो अहेड। सर तो फर्स्ट पहली ट्राई में आपने x = 2 को मिनिमम वैल्यू बोला। रुको क्षितिज, मैं ना तुमको स्पॉटलाइट करता हूं तो मे बी एटलीस्ट आई बी एबल टू लिप सिंक। हाँ बोलो। ईयरफोन का फर्स्ट ट्राई में आपने x = 2 को मिनिमम वैल्यू बोला था, वो बता। x को मैंने x = 2 को मिनिमम वैल्यू बोला था इंस्टेड ऑफ x = -6। हाँ। तो क्षितिज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, अच्छा मैं एक बार रिपीट करता हूं। सो यू आर आस्किंग मी कि मैंने x को मिनिमम 2 बोला, व्हिच इज नॉट करेक्ट, राइट? नहीं, मैं I was not making statement on my own behalf. What I was saying, people who got it wrong, जिन्होंने शायद ऑप्शन डी में भेजा था मुझे, तो उन्होंने एक छोटा सा मिस्टेक क्या कर दिया, उन्होंने मिनिमम -6 है एंड नॉट 2। तो उन्होंने मिस्टेक क्या कर दिया कि उन्होंने इसको -11 लिया। -6 नहीं लेते क्योंकि वो 66 हो जाता। उन्होंने x को 2 ले लिया और यहाँ पे इसको -11 ले लिया। तो they had gone by possibly that magnitude कि ये उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं इसको 2 लेता हूँ। तो दे मे नॉट हैव टेकन x को एज मिनिमम। आई एग्री। उन्होंने x को एज मिनिमम नहीं लिया होगा, क्योंकि x को मिनिमम लेते तो ये -6 लेते। ठीक है क्षितिज, करेक्ट। So anyway, we are not defending them. So आपको इसको ऐसा करना है कि वो प्रोडक्ट को मिनिमम लाना है, वो एक छोटा सा ध्यान रखना है। So I think we'll do one more problem before we go for a bio break or water break. This is question number 16 on your book. This is real SAT, guys. Calculator allowed है and I'll give you 90 seconds, 1 minute 30 seconds. जैसा मैंने बोला कुछ questions में समय लगेगा, तो इसमें लगेगा। Please solve question number 16 from your book. Yes, sir, correct. So you have possibly done this before, sir. क्लास से पहले कर लिया तुमने? ठीक है। Patiently करिए, you can have your own method. Don't worry about it. समय लगाओ और आराम से करो इसको। Question number 16. क्षितिज मित्तल, correct.
Anadas, you've done this? Sorry, sir. Completed? Yeah. Okay. Hold. Yes, Kim, correct. Server correct. So I'll be interested in your method, guys. I'll speak to you and I'll want to know. सबसे पहले आंसर किसने दिया था? Sahas. So I'll start from Sahas to Kshitij to Kim to Sarvarth. And I would want to see what is your method, how have you solved this? Chalo, Abhyuday, you can announce your answer, bete. Abhyuday. Sir, I was confused between C and D. ठीक है. So there's some confusion between A and D. ठीक है. Let's see. Mohana. Same, D, maybe D. Okay, let's see. Sarah. I think it's B only. D for Delhi. ठीक है. बाकी इन सबका आंसर आ गया. इधर आ गया नीलांजन, स्नेहित, चिन्मय. ओके, चिन्मय का भी एक आंसर आ गया. ठीक है. नीलांजन. Sir, I'm confused between C and D. स्नेहित, अभी मैं हेल्प करता हूँ. स्नेहित. ईशान. Sir, I am also confused between C and D. Okay, let me try and help you. स्नेहित, बोलो क्या हुआ? नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन? नहीं हो रहा है सर. ठीक है, अभी करते हैं. चलो साथ में करते हैं. तो मैं सबसे पहले सहस जॉन, या आर यू देयर? हाँ, ये रहा. सहस, आई वांट टू नो योर मेथड. अब आप लोग, आपके बुक में आपके पास क्वेश्चन है, मेरे पास मेरे बुक में है. किम ने उसको पढ़ लिया. सो आई एम नॉट शेयरिंग द क्वेश्चन राइट नाउ. यस सहस, आई वांट टू नो योर मेथड. कैसे किया है आपने इस क्वेश्चन को? Sir, I first marked that number on number line, so to get a rough idea, and then I first Yes, read the question loudly. जोर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को for all of us. the Earth is made up of 4 primary layers: the inner core, outer core, mantle, and crust. The outer core is more than 800 miles and less than 2,200 miles from the Earth's center. Which of the following inequalities represents all possible distances d in miles from the Earth's center that are in the outer core? So we have to find an expression. There is nothing to solve, which represents the above given case. उसको उन्होंने absolute value में कोई एक equation में दिया है. आपको उसको find करना है वो क्या है. And that distance is given as d. It is said that this distance is कितना greater than or equal to 800. Sir, it's more than 800 and less than 2,200. It is more than 800 and less than 2,200. Equal to तो नहीं है ना कहीं भी. So No, basically this is the relationship or this is the thing, but unfortunately none of the option is talking about this thing in this form. So they are asking कौन सा option right है. हाँ, अब बताओ सहज, तो आपने क्या किया? Sir, now then I solved the first option. So first option मिला नहीं, so I directly jumped to the last one because I was not getting with the first one. So I tried with the minus. Sahas says he has gone option wise और उसने सबसे पहले option A उठाया. Option A बताओ क्या है? Mod of d plus 800. Mod of d plus 800 is less than 2,200. is less than 2,200. तो उसने इसको सॉल्व किया और ये देखा कि क्या उसको ये मिलता है. ऑप्शन ए को तो सॉल्व करते हैं. d plus 800 less than 2,200, d plus minus of d plus 800 less than 2,200, d plus 800. So 800 subtract करो दोनों साइड से, this will be d less than 1,400. ये आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. d less than 1,400 आ रहा है जबकि d less than 2,200 होना चाहिए. Anyway सॉल्व करते हैं फिर. d plus 800 greater than minus 2,200. So d should be greater than minus 3,000. Absurd. This doesn't make sense. We are talking about distance. तो ये आंसर हो ही नहीं सकता ऑप्शन. फिर उसने क्या किया, ऑप्शन डी उठाया कि ए नहीं है तो मैं डी पे आता हूँ. And for him he was lucky. D actually ये expression बन गया सहज for you and you mark your answer as D, right?
Sir, for the first time, I was not getting with the positive sign in between, so I tried with the negative. Okay. I'll hold on this. अभी सर इसके बाद कौन था? क्षितिज मित्तल. What is your method, क्षितिज मित्तल? Sir, I tried. So सबसे पहले अगर values देखो भैया, तो only D में it comes like D is less than 2200. So you have also gone option wise. आपने A try किया, B try किया, C try किया. Try नहीं किया. अगर first if you mentally only if you take all the numbers to the other side, सिर्फ एक में ही D is less than 2200 आ रहा है. D में ही सिर्फ D is less than 2200 आ रहा है. बाकी सब में it's more or less than some other value other than 2000. तो आप बोल रहे हो ये आपने मेंटली सॉल्व करने का कोशिश किया. व्हेन यू टेक -1500 ऑन दिस साइड, इसमें वो 2200 आएगा, इसमें ये -800 आ जाएगा, इसमें +3000 आ जाएगा, और इसमें +1400 आ जाएगा. तो आपने मेंटली ऐसा करके देखा और आपने बोला नहीं ABC नहीं, आंसर डी है. ये आपका मेथड था. हाँ, क्योंकि ऊपर दिया it should be less than 2000. ठीक है, मैं बताऊंगा ये मेथड यहाँ पे वर्क कर गया, बट एक जगह प्रॉब्लम हो जाएगा, बट अभी ठीक है. ओके, क्षितिज के बाद आई वांट ऑन सर्वर. व्हाट वाज योर मेथड? सर सेम मेथड. किसका सेम? क्षितिज सेम की सहस सेम? whoever said it now last. क्षितिज मित्तल वाला सेम. ओके ओके. एनी अदर मेथड गाइस? आंसर सही है डी. एनी अदर मेथड? So my advice to you for solving this question is there is a trick, वो तो मैं आपको बता दूंगा, but otherwise ये जो सहस चौहान ने किया that is D method. क्षितिज मित्तल के मेथड में एक छोटा सा प्रॉब्लम है which is क्षितिज मान लो ये मैं वापस दिखा रहा हूँ. मान लो एक ऑप्शन ऐसा है, अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे तो let's say the option is क्या करूँ मैं? Let me take a red pen here. I have a red pen. मान लो ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है. If I change option C where I say D -1500 और वहां पे greater than equal to 700. हाँ क्षितिज बोलो. So then also you can do the same method, क्योंकि less than 2200 होना चाहिए. तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा 2200 जो कि ऊपर में नहीं है, और तब भी आप आंसर डी को मार्क करोगे. तो आपने कोई एक कंडीशन चेक किया, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है उसमें तो ठीक है, नहीं तो देन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गोइंग अहेड. अच्छा, और एक ऑप्शन में तुम्हारे लिए सिर्फ एक डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन हमेशा राइट होगा क्या. अगर दो ऑप्शन में से तो सिर्फ नेगेटिव 800 का भी लेके देखना पड़ेगा. नेगेटिव करके अगर दो ऑप्शन में सेम चीज आ रहा है तो you have to also do the negative. एक मिनट रुको. लेट्स से ऑप्शन इज, यहाँ देखना जो मैं लिख रहा हूँ. लेट्स से वन ऑफ द ऑप्शन इज दिस. लेट्स से वन ऑफ द ऑप्शन इज दिस. एक डी है और एक ऑप्शन ई है. लेट्स से ऑप्शन ई. सर ई ऑप्शन इज D -1600 की 1400. हाँ सर ई ऑप्शन में इट्स -1400 और 1600. 14. सर फिर वो सेकंड वाला कंडीशन आप चेक करोगे, राइट? यस सर. So now let me come back and let me tell you कि इसका right method हम क्या करेंगे. So आप वो कर सकते हैं क्षितिज, but guys I will advise if you face a problem like this, you should do what Sahas Chauhan did. There is no other method. Go by options. Option A बनाओ, it will not fit. B बनाओ, if it doesn't fit. C बनाओ, if it doesn't fit. Don't make D, क्योंकि अगर ऊपर के 3 नहीं फिट हुए और वो अच्छे से चेक किया है तो by default आंसर D होगा. तो इसका कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड तो यही है और ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए. यू विल हैव टू गो बाय ऑप्शंस प्रोवाइडेड यू अंडरस्टूड द पैराग्राफ गिवन. फिर आपने वो एक रिलेशनशिप बना ली है, D is greater than 800 and less than 2200. Go by options, check which option is giving you and then solve it. Up before I give you a trick to do it in 5 seconds, let's say, is there anyone in class who have not understood this method? जो कि मेन क्रक्स ही है. ट्रिक तो क्या है, अगर मैं कुछ कंडीशन चेंज करूंगा तो ट्रिक नहीं लगेगी.
बट ये समझ में आ गया, ये मेथड समझ में आ गया स्नेहित? ए बी सी डी सारे ऑप्शंस को चेक करना है, रादर 3 ही चेक करना है। 3 चेक में नहीं मिलेगा तो जो 4th ऑप्शन बचा वही होगा। सर्च ने किया ए किया फिर बी किया, डी किया। अगर मान लो बी आंसर होता तो उसको 3rd बार में मिलता, या सी होता तो वो बी करने के बाद वो सी पे आता है, जो भी आता। द अदर वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम इज, एंड आई डोंट रेकमेंड दिस, क्योंकि कितने फॉर्मूले और ट्रिक याद करोगे आप, अभी तो कोर्स पूरा बचा हुआ है, मेंसुरेशन में बहुत कुछ याद रखना है। बट अदर वे इज that if you have identified that in your inequality the relationship is of this type, जिसको in between relationship बोलते हैं, अगर ऐसा वाला in between है guys, then you can directly apply this formula where you will say variable minus the midpoint of that entire range will be less than, या midpoint निकाल लोगे, distance of midpoint from any of the extreme, तो मैंने देखा रिलेशनशिप ऐसा वाला है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है डी। 800 एंड 2200 का मिड पॉइंट क्या है? 800 प्लस 2200 डिवाइडेड बाय 2, 1500। लेस देन 1500 का डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सट्रीम, ये आंसर होगा। ठीक है, बट इसके लिए अजम्पशन क्या है? बेसिक कंडीशन ट्रू होना चाहिए कि रिलेशनशिप इन बिटवीन टाइप है। D is lying in between these two values. Variable minus midpoint of the range less than, mod यहाँ पे आ गया, less than distance of this midpoint from any of the extremes. Let's say if it is not in between relationship, वो in between नहीं है, जैसा आप लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था ना हमने, वो x का इंटरवल निकालो और कुछ ऐसा आया था, ये 0 है और यहाँ पे था -6 और ये था 4. So we said x is less than -6 or x is greater than 4. x या तो इस तरफ है पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, ये इन बिटवीन नहीं है रिलेशनशिप। मान लो ऐसा रिलेशनशिप है, so how do you solve? तो उसका हो जाएगा वेरिएबल माइनस मिड पॉइंट ऑफ दिस रेंज ग्रेटर देन, बाकी सब वही, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम एक्सट्रीम। अब इसको करके देखते हैं। लेट्स से यही चीज है, सो x माइनस -6 और 4 का मिड पॉइंट, बोलो। -1. -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1 ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ दिस 1 फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सट्रीम्स। अब इस पे क्वेश्चन आया था, अभी करते हैं। लेट्स गो टू दैट प्रॉब्लम। मैं क्विकली आता हूँ, आई टोल्ड यू विल गिव अ ब्रेक, बट रुको, ये क्वेश्चन करके ही जाते हैं। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। I will advise you, you should solve first by Sahas Chauhan's method, not by any trick. ये वाला करो, question number 17 on your book, Mr. Shepera, real SAT problem, word by word. Sir, in the second case, the variable part was greater, right? हाँ, hold on, बात करते हैं, रुको। Yes, correct. Kshitij Mittal and Sahas, correct.
Correct, Chinmay. So Chinmay, unmute and read the problem loudly. जोर से पढ़ो question को. Server Yes, sir. For a pumpkin craving, Mr. Sefera will not use pumpkin that weighs less than 2 pounds or more than 10 pounds. If X represents the weight of a pumpkin in pounds, he will not use which of the following inequalities that represents all possible values of X. Very important to note, Kim, correct. X represents weight of pumpkin in pounds. Mr. Shepera will not use. तो हम ये देखें X वो क्वांटिटी वो वेट है जो वो यूज नहीं करेंगे. कौन सा यूज नहीं करेंगे? If X is less than 2, अगर X 2 किलो से कम है, he will not use such pumpkins. And at the same time, he will not use pumpkins where it weighs more than 10. So X greater than 10 he will not use, and X less than 2 he will not use. So we have to find which of the inequalities represent all possible values of X, मतलब weight of pumpkins he will not use. ये in between वाला relationship नहीं है. So you go by options से check करते जाओ, or by that trick which says variable minus the midpoint 2 and 10 12, midpoint आएगा 6 पे. So 6 greater than का साइन लगेगा क्योंकि in between relationship नहीं है. 6 का distance from any of the extreme is 4. अब आप इसको खोल के try करो तो you will see that you will land here. Answer is option D. बोलो, टारगेट टीम समझ में आया ये? वार्षणी? So this is how we solve this. मैंने एक एक करते करते बहुत क्वेश्चन ले लिया, but this is last problem. ये एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आपके बुक में है, ये चैलेंज प्रॉब्लम में भी है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 भी है फ्रॉम योर एक्सरसाइज. Again, real SAT problem hai. Please solve this and then we will go for a break. Question number 18. SAT challenge question 2 or 18? SAT challenge problem 2. Correct, Kshitij Mittal. Give yourself 1 point if you are getting it right in the first go. See if you can do. पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो ये इन बिटवीन है कि नहीं है. अगर है तो फिर वो ट्रिक भी लगा सकते हो, और यू कैन गो बाय ऑप्शन. सहस, लेट मी कम बैक टू यू. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपने क्या बोला है अभी. आई विल टॉक टू यू. होल्ड ऑन. सर्वत्र करेक्ट. गिव योरसेल्फ 1 point. Admission into an investigate agency require the applicant be between age of 32 and 46. Between this age, which of the inequality can be used to determine whether an applicant age D satisfies the requirement for the agency? Option A, B, C, D. Okay. So Chinmay, I want you to actually solve option A. उसको solve करो और D की possible values निकालो. Option A को. Yes. D minus 7 less than 39. Kim, let me know whenever you want to see that problem. मैं एक बार अभी इसको solve कर रहा हूँ. So I am solving option A, guys. D minus 7 less than 39 minus of D minus 7 less than 39.
So add 7 on both sides. This will be 7 plus करेंगे तो 46 हो जाएगा इधर. ये हो जाएगा D minus 7 greater than minus 39 या D greater than minus 32. चिन्मय Sir. समझ में आया क्या गड़बड़ किया आपने? Yes, sir. Because they want ये जो एज है ये 32 से 46 के बीच में होना चाहिए. So both are not included. This is the kind of expression I am looking at. Now what says? I got it. Okay. Now I go to my gallery and I'll ask each one of you. Abhyuday bolo. B. Okay. Sarah. Sir, A. A. Varshini. Sir, A. A. सर्वर्त ने बता दिया. क्षितिज मित्तल आपने भी बता दिया आंसर ना, भेज दिया ना मुझे चैट में. Yes, sir. सहस ने भेजा. सहस, what's the answer? Sir, A. A. स्नेहित. Sir, A. A. नीलांजन का आंसर आ गया है. किम. A. Can I look at the answers once again? Okay, sure. Okay. Chinmay, I got your answer and Ishan का आंसर आ गया है. Sorry, Kim, sorry. I'm waiting. Bolo, which one? Sir, Yes. correction in my answer is D, not B. ठीक है. Done, Kim? तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं बाय आवर मेथड. इट सेज वेरिएबल माइनस द मिड पॉइंट 32 and 46. So sum is 78 divided by 2 39. Midpoint is 39. In between है less than 39 का distance from 32 या 39 का distance from 46 is 7. Answer is option D. All those who got D in their first attempt, this is right. जिनका A आया और बहुत सारे लोगों का A आया, देखो हमने इसको सॉल्व किया है अभी. It's not making sense. ये वाला पार्ट D greater than minus 32 आ रहा है एक पार्ट. हाँ मित्तल साहब बोलिए. गलती से. हाँ गलती से. ओके बोलो गाइस. चिन्मय आया समझ में? Yes, sir. सारा दास. Sir, I'm not understanding why in the first case we're not looking at A. It satisfies the equation saying that the age needs to be lesser than 46. Absolutely right. ठीक है. But then, I mean, I just have to condition it needs to satisfy one relation. No, Okay, not ठीक है. तो इसको सॉल्व करते हैं. I got your point. So if I put it on number line, Sarah, so how it will look like? ये देखो ऐसा दिखेगा. D can take any value between minus 32 to 46. This is how you will plot option A. Bolo. yeah, sir. Which means a value of D is equal to 2 is also acceptable. So we got it. Whereas agency says a 2-year-old cannot come in my agency. I want somebody who is more than 32 and less than 46. Yes, sir. Sir John, now I come back to you. Sir John का एक observation है इस question को लेके. Yes, sir. बोलो. Me, in the second, the challenge question, sir, I can't find this option. Yeah, D sir. minus Challenge 39. question Yes, में sir. sir printing mistake हुआ है. D plus 39 greater than 78. Oh, okay. I am very sorry. तो मैं इस पे वापस आता हूँ. So इसमें only if you have got it right तो मैं कुछ इसमें penalize नहीं करूँगा. वैसे भी penalize नहीं कर रहा हूँ. अब बताओ क्या बोल रहे हो? ये जो fourth option है जो मेरी स्लाइड में दिख रहा है challenge problem में बुक में ये गलत printed है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. क्या printed है वो? Plus दिया है. Plus Sir, 39. D plus 39. So So that's guys, please make this small correction and my sincere apologies to all of you. I think इसलिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि ABCD में
बेस्ट फिट कौन सा आ रहा है, और वो शायद ए आ रहा होगा, इसलिए कई लोगों ने ये दिया होगा. आई एम सो सॉरी. सो प्लीज चेंज करो आपके बुक में. ऑप्शन डी शुड बी डी -39 एंड नॉट डी +39. डी -39 उसको चेंज कर लो. थैंक यू सर फॉर मेकिंग दैट करेक्शन. With this, I've almost eaten into your break, but I'll still give you. It is 1:04 on my watch. हम 1:09 पे मिलेंगे and we'll start with complex numbers. Thank you. We take a break, छोटा सा. Okay, so let's start. Now, we just finished absolute value, and this is the kind of range of questions you'll have on absolute value. अगर ये किसी और कॉन्सेप्ट के साथ क्लब हुआ तो बात अलग है, बट अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं. इनइक्वालिटीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड problems. I mean, they are asked together most frequently. So that's what we have covered. Next, we move on to complex numbers. Like I said, complex number, you should get one problem from complex number. And the scope is the very basic introduction, जो उसका introductory part है complex numbers का. 11 CBSE NCERT में. उसमें it's only the introduction part which is there in SAT, which we must understand. So I will cover that. I think it will take me 10 minutes and then we'll solve some problems. चलिए तो इसको करते हैं. Sir, I have a doubt. Yes, please go ahead. SAT, in complex number questions, will trigonometry will also be included in complex number? Like, you know, there are some questions in which trigonometry is there in complex number. So those type of questions will also come. No. So both are part of SAT, Abhyuday, complex numbers and trigonometry, but you will not find problems where they are clubbed together. You will have questions on trigonometry, but they will be mostly related to complementary angle rule and sine, cosine functions, but they will not be clubbed with complex numbers. Complex numbers में basic उसका एक I का जो power cycle होता है वो आना चाहिए, और operations on complex number, addition, subtraction, multiplication, division, ये आना चाहिए. बस यही दो part complex number का cover होता है. Plotting on Argand diagram और वो सब भी नहीं आएगा. Sorry? Plotting in Argand diagram and नहीं 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 नहीं, आप बहुत आगे चलेंगे. नहीं, ये सब कुछ नहीं आता है. ठीक है. Okay, so coming now to understanding of complex numbers, how would you define this? What is your understanding of complex numbers? What are complex numbers? So we know, the counterpart of complex number, where we say that there's something called as real numbers. ये हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है, 10th तक हम real number system में पढ़ते रहते हैं. So real numbers is something that we have studied, where we have seen numbers like 0, 1, 0.3 bar, pi, and all these things we have seen, and we say that they are real numbers. And so we plot real numbers on number liner, वो सब plot हो सकता है. But when it comes to complex numbers, these mathematical scientists said that, what if square of a number, let's say if I've got a number, and if I square this number, I get -1. So we know in real system, this is not possible. Real system में किसी number का square -1 नहीं हो सकता. But on an imaginary plane, these researchers said that, let's say there are two axes. One is your real axis, and the other is imaginary axis. So they said that for any number z, it will have two parts. It will have a real part, let's say a, and it will have an imaginary part. और उसका एक imaginary part होगा. एक उसका real part होगा और एक उसका imaginary part होगा. So if I put it on a coordinate plane, let's say x-axis is the real part and y-axis is the imaginary part. And let's say if there's a number here on this plane, which is a, and imaginary part पे मान लो ये b है, then this number can be written as
A plus I times B. So this is IB, which is imaginary part of any number. अब जब हम रियल सिस्टम में बात करते हैं तो उसका B 0 होता है, उसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, तो इसको आप 0 करोगे तो Z becomes equal to A. Hence, all numbers are of the format Z, where they have a real part plus an imaginary part. Real system में imaginary part, which is B, becomes equal to 0, and you move on this real plane. आप इसी पे move करते रहते हो. But what if a number has an imaginary part, which is square of that number is equal to -1? So imaginary part को हमने I मान लिया, small I. This is the convention that we started following. Sorry. And we said that, let's say square of this number is -1, or this I is equal to root of -1. Real system में under root or root of negative numbers को define ही नहीं किया गया है. They have not been defined. They say, we say that that's not possible. It cannot be defined. इनका square root नहीं निकल सकता. But imaginary numbers में square root defined है. It is root of -1 is I. उसको I कहा गया है. So complex number is nothing but a number which has a real part plus which has an imaginary part. So I will say, let's say real part of Z is equal to A and imaginary part of Z is equal to B. हम इसको इस तरह से लिखने लग गए. तो SAT में दो skills important हैं with respect to imaginary number जो हमको याद होना चाहिए. One is this concept of I. This concept of I is very important, which you must know. So for example, if I have a number which is root of -49, I can write this number as I root 49. क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ root of 49 into root of -1. So this is nothing but root I root 49. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, or I can say 7i. ठीक है. तो आपको इसमें क्या याद रखना है? जो first skill that is required from SAT point of view with respect to complex numbers is, guys, that I is equal to root of -1. So इसका एक power cycle होगा. I to the power 1 will be my root of -1. I square will be -1, square both sides. I cube, एक I यहाँ multiply करो, एक यहाँ multiply करो, is equal to -I. And I to the power 4 minus I into I square होता है -1, minus of -1 plus 1. This is called power cycle of I, जो आपको याद रखना है. अब देखते हैं I to the power 5. I to the power 5 multiply an I here, multiply an I here. I to the power 5 will be nothing but I. I to the power 6. Again, you will see this is -1. I to the power 3 will be, I to the power 7 will be -I, and I to the power 8 will be +1. तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं पावर साइकिल को देख के? I का जो पावर है n, if it is a 4 का मल्टीपल, if this power is 4 multiple, 4 का मल्टीपल है अगर पावर, for sure the value of that I to the power 4 का मल्टीपल will be +1. अगर I का पावर इवन है, अगर I का पावर इवन है तो या तो वैल्यू -1 होगा या +1 होगा. मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स बता रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ. कंक्लूजन 1, अगर I का पावर 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू +1 होगा. अगर I का पावर इवन है तो या तो वैल्यू -1 होगा या +1. Other than that, there is no other conclusion that I can draw. मुझे तो ये दो कंक्लूजन ही दिखते हैं जो आप पावर साइकिल से निकाल सकते हैं. अगर वो 4 का मल्टीपल है, इट विल बी +1. अगर वो इवन पावर है तो वो +1 होगा या -1. वो 3 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग राइट नाउ. सो आई के पावर साइकिल में आपको ये याद रखना है. सो लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -I to the power 48. Give me the value of. So मैं ऑप्शंस में लिखूंगा जो आंसर्स आप बोलोगे. पहला ऑप्शन आया है -1. एनी अदर आंसर? Any other answer? -I to the power 48.
-1 seems correct, right? Because I to the power 48 ये 4 का multiple है, this will be 1, minus of 1 would be -1, answer is -1. बोलो ये समझ में आया? So power cycles पे एक question generally अगर आता है तो इसमें से एक question आ सकता है, ये एक पहला चीज है that you must know. So on this note, I want you to solve a particular problem from your book. फिर मैं आगे बढ़ूंगा. And this question number is, एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ. I want you to solve. Yes. Sir, I know it's not related to it, but if the power is I to the power, can it be I to the power 0? Can it? Bilkul, why not? So your question is, can we have something like I to the power 0? Who asked this? Varshni. So can it be I to the power 0? Bolo guys, is this possible? Why not? Why not? I to the power 0 ho sakta hai. What is I to the power 0? 1. Because anything to the power 0 is 1. So this is 1. So this is possible. Yes, why not? I to the power 0 will be 1. So I was talking about a particular problem which came on your SAT paper. I want you to solve question number 7 on your book. And let me also share it at the same time. Question number 7 is something like this. Send your answers privately. If I to the power m is equal to minus I, which of the following cannot be the value of m? So I'm getting different answers from this class. So अभी मैं नहीं बता रहा right क्या है, wrong क्या है, but जैसे I've got answer from Kshitij, Sahas, Sarvatra, and I'm getting different answers, different options as answers. So debate करते हैं, देखते हैं. Okay, Kim, I've got an answer from you as well. This is my options लिख लेता हूँ 15, 18, 19, 27. Given that I to the power m is equal to minus I. Okay. Okay, Chinmay, answer registered. Nilanjan, answer registered. So अभी क्या हुआ है, इतने सारे आप लोगों ने आंसर दिया है, and I've got answer as option A, किसी ने B दिया है, किसी ने C भी दिया है. तो A, B, C ऐसे 3 आंसर्स आए हैं. So I'll quickly check with you guys. अभ्युदय, बताओ. What's the answer? Question number 7. B. Varshni. B. Sara. B. Chinmay, C. है ना? Kshitij. B. B. Sahas. So C. C. A, B, C चल रहा है अभी. Sarvatra, I think you said C, Sarvatra, right? B. 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 Snehit. B. Okay. Nilanjan. A. A. Kim. C. तो बहुत अलग अलग आंसर्स हैं. इसको सॉल्व करते हैं. चिन्मय, we start with you. Which option are you defending? C. C. चलो डिफेंड करो. ये तुमको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है वहां पे. I to the power m is equal to minus I. m का कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता is what they are asking. Okay? And you are defending option C. 19 नहीं हो सकता m का वैल्यू. ठीक है? बोलो चिन्मय. Yes. And Kim, you also said C. All those who guys who have said C, देखते हैं. हाँ, I to the power 19 को solve करता हूँ मैं. I to the power 19 को solve करता हूँ. And Chinmay, we are solving this together, तो unmuted रहो तुम. I to the power 19 उसको भूल जाते हैं. I to the power 20 solve करते हैं. What is so special about I to the power 20? ये 4 का multiple है 20. This is +1. तो I to the power 19 इससे एक कम होगा, मतलब इससे पहला वाला होगा. यहाँ पे आते हैं. I to the power 20 यहाँ पे. Yes. This is I to the power 19. Yes. Kim. तो I to the power 19 का वैल्यू क्या होगा भाई? Minus. और वो यही तो बोल रहा है. Sir, तो 9. हाँ. 19 is not the multiple of 3, right? 19 is not. The multiple of 3, right? So If you are asking me
तो गलत है, बट अगर तुम बता रहे हो तो सही बता रहे हो, करेक्ट। हाँ, सो I'm saying 19 is not the multiple of 3, right? So यस, सो व्हाट, अरे भाई 3 के मल्टीपल पे तो मैंने कोई कंक्लूजन दिया ही नहीं, वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं अभ्युदय, बिकॉज कभी वो 3 का मल्टीपल होगा तो माइनस आई आएगा, कभी नहीं होगा तो नहीं आएगा, सो आई कैन नॉट कंक्लूड। बट व्हाट आई एम सेइंग इज 4 के मल्टीपल पे +1 मिलेगा, मतलब 4 का मल्टीपल -1 हमेशा आई देगा, चिन्मय माइनस Yes, आई sir. देगा। 4 का Yes. मल्टीपल -1 विल ऑलवेज गिव मी -i के, तो i टू द पावर 19 विल गिव मी -i, ये तो वैल्यू हो सकता है, उन्होंने पूछा कौन सा नहीं हो सकता। 15 इज 4 का मल्टीपल -1, 27 इज 4 का मल्टीपल -1, 18 इज नॉट 4 का मल्टीपल -1, इट इज 4 का मल्टीपल -2 या 4 का मल्टीपल +2, कैसे भी समझ लो इसको। Yes. i टू दी पावर 18 जो है वो 4 के मल्टीपल में या तो आपने 2 जोड़ा है या 2 कम किया है, either you have added 2 or subtracted 2. This will never be equal to -i, that will be equal to -1. So answer is B, m cannot be 18. Kim, you look lost. Have a look at the question once again. They are asking which of the following cannot be value of m. We just saw if I to the power m has to be -i, this is only possible when the power is 4 का multiple -1. 15 is 4 का multiple -1, 19 is 4 का multiple -1, and 27 is also 4 का multiple -1. 18 is not 4 का multiple -1. This is 4 का multiple -2 या 4 का multiple +2, in which case the value will be -1 and not -i. So m cannot be 18. बोलो गाइस, ये आ गया समझ में? सो लाइक आई वाज सेइंग कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मगर कंफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं रियल एसएटी का, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर बुक, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 करो, और ये मैं शेयर भी करता हूँ। Given that I is equal to root of -1, which of the following is equal to 1 upon I cube? Option A is I, option B is -i, option B -i, option C 1, option D -1. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, this is basically -i. ये इसको चेंज ही करो ना हमेशा के लिए। Okay, okay. So I've got answers from Kim, Sarvat, Sahas. इतना क्या सोच रहे हो, 1 अपॉन आई क्यूब दिया है। हाँ, ये अलग अलग आंसर्स आना चालू हो गए। ओके, ठीक है गाइस। क्षितिज, ओके ओके। सो बिफोर आई डिस्कस दिस, हाँ मुझे ना A B C D ऐसे सभी ऑप्शंस आ गए हैं अलग अलग। So I think there's a small issue. I should do one more concept with you guys, and then I will discuss this. So एक हमने power cycle देखा. Yeah, I got your answers. So now you hold on to that. So one is power cycle that I want you to remember. Let me do one more concept, and then we'll go ahead. तो हमने अभी define किया that any number can be written in this form. Any number can be written in this form where I can say it is a plus ib. And I'll say it's a complex number where A is the real part, B is the imaginary part. तो ये इसका real part है, ये IB जो है वो imaginary part है. I say that this is a complex number. इसको complex number मैंने define किया, जब B 0 हो जाएगा तो सिर्फ real part बचेगा, या जब A 0 हो जाएगा तो सिर्फ imaginary part बचेगा. So this is how it is. The second thing SAT would want you to know and they will test you is
They will want you to know how, basic mathematical operations on complex number. You must know about that. Addition, subtraction, multiplication and division. ये चारों complex number से करते आने चाहिए. तो वो करने की कोशिश करते हैं. Let's say I have a complex number 2 plus 3i plus another complex number जो add करना है 5 plus 6i. So when you are talking about adding two complex number, the rule says you should add real parts and you should add imaginary parts. So real parts add karo. 2 will be added to 5, real to real. I'll get 7. And imaginary part will be added to imaginary part. 3i plus 6i, I will get 9i. ये submission है two complex numbers का. Complex numbers को जब add करना है, मैं repeat कर रहा हूँ, real part to real part add होगा और operations होंगे उनमें and imaginary part to imaginary part होगा. Nothing else. Let's say अगर यही subtraction करना था 2 plus 3i subtract 5 plus 6i. So this will become 2 plus 3i minus 5 minus 6i. So this will be equal to minus 3 minus 3i. This is subtraction of two complex number. Real part से real part subtract करो, imaginary part से imaginary part subtract करो. Very simple. Let's say it is about multiplication. 2 plus 3i into 5 plus 6i. Distributive law लगेगा. Real part को इसके ऊपर distribute करो, imaginary part को लेके second bracket पे distribute करो. तो पहले real part 2 into 5 10, 2 into 6 12i plus 3i into 5 15i, 3i into 6i, 3 into 6 18, I into I square. I square can be written as minus 1. तो ये हो जाएगा minus 18 plus 10 12 plus 15 27i. So ये overall हो जाएगा minus 8 plus 27i. This is multiplication of two complex numbers. बोलो guys, ये सब clear है? Yes. If it is about division, 2 plus 3i divided by क्या number दिया था मैंने 5 plus 6i. Let's say I'm dividing these two numbers. जैसा आप surds में करते थे. The idea is denominator में imaginary part नहीं होना चाहिए. So you'll have to take the conjugate of this complex number, multiply and divide by that. Conjugate का मतलब होता है अगर मेरे पास a plus ib एक complex number है, इसका conjugate होगा a minus ib. Imaginary part का sign change. तो उससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 minus 6i से मल्टीप्लाई करो और 5 minus 6i से ही डिवाइड करो. एंड नाउ सॉल्व दिस. अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जो भी हमने देखा. इसके डिनोमिनेटर में a plus b into a minus b, a square minus b square 36i square. तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 25, i square होगा -1 plus 1 plus 36. न्यूमरेटर तो आप सॉल्व कर लोगे अभी जैसे मैंने बताया था. बोलो ये हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशंस करते थे ना हम सर्ड्स में, ये बिल्कुल वैसा है. टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. डिनोमिनेटर में वो नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए. यू सॉल्व दिस, यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. वो अगेन a plus ib के फॉर्म में होगा. ऐसा हो सकता है a फ्रैक्शन हो और b भी एक फ्रैक्शन. दैट इज पॉसिबल. So it could be something like 7 by 2 plus let's say 9 by 2i. ऐसा कुछ आ जाएगा तो ठीक है. That's okay. This is your real part. This is your imaginary part. Now we come down to this question. तो मुझे ये तो याद है कि चिन्मय ने गड़बड़ किया था. We come down to this question जो मैंने आपको दिया. 1 upon i cube. I want Sara Das to solve this. Sara, you help me solve this. बताओ क्या करना है मुझे next. Sir, first substitute the value of I cube, so it becomes 1 upon minus I. I cube होता है minus I, so I'll do it like this. Okay, Sara? And now you take sir the conjugate, so you get I तो on इसका top. conjugate लो, which is plus I से multiply करो और plus I से divide करो, right? So this will be equal to I upon minus of I square. I upon I square is -1 plus minus of -1 plus 1. So this is equal to I. बोलो चिन्मय. Yes, sir, got it. So this is how you solve this. Sir, can you show the previous? Can I show what? Can you show the previous page? Previous.
ये एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला, दिस वन. Yeah. Okay. So this is all for complex numbers, guys. ये complex numbers में आपसे पूछा जाएगा और आपको यही करना है इसमें. So one problem for your practice and then we close. मैं आपको बुक में से बता रहा हूँ. And then I'll take your questions if you have any. But ये समझ में आ गया. So ये किसका, नीलांजन, did you follow this? तुमने आंसर बी भेजा था मुझे. Yes, sir. So guys, I want you to solve question number 9 on your book. And I give you 30 seconds. Question number 9. ये थोड़ा सा controversial हो सकता है. Let's see. So can you share your screen? हाँ, sorry, अभी करना है. Question number 9 का है मेरे पास. Yeah. This one. Send me your answers privately, please. Okay, Sarvatra. Yes, Sitij, like expected. I'm getting different answers. Okay, Chinmay. So Chinmay, Sarvatra, and Kshitij. Let's see. Root of -18 into root of -50 written in simplest form. Okay, who's this? Yes, Nehit, got your answer. तो ये तो सिंपल है, आप लोगों ने देख लिया. मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ. किम, रूट ऑफ -18 इंटू रूट ऑफ -50 करो और फिर ABCD -30 -30I 30 Okay, I'll take a quick poll now. Let me do a gallery view and Kharga team को देखने को मुझे. Yes, Varshni. So not sure, but maybe B. Maybe B. Sarah. Sir, I'm confused between A and C. A and C में ही है सारा फाइट. वही है सब जगह. आधे लोगों का A है, आधे लोगों का B है. So let's see then. Yes, Abhyuday. A. Kshitij Mittal. Sir, A या C? A या C. Chinmay. A. Chinmay A. Sarvatra. A. A. Sahas. I don't know. Don't know. Nilanjan. Sir, B. B. Sneh. Option A. A. Kim. A. A. Okay. हाँ, तो ये थोड़ा सा ना मतलब फाइट A और C में ही है. और मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ सबको. A और C कौन सा है? A is -30 and C is 30. ठीक है. So who got C? How many of you got C? C को कौन डिफेंड कर रहा है क्लास में? C को डिफेंड करो. Who is doing that? जिसका C आया वो डिफेंड करेगा ऑफ कोर्स. चित्त मतलब C आया ना तुम्हारा? C और A में नहीं, C आया है तुम्हारा. चलो C को डिफेंड करो. बताओ कैसे आया C? ठीक है, चलो बेसिक अर्थमेटिक रूल से चलते हैं इसमें. आई मीन यू विल गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. जिनका C आया पहले मैं C निकाल के बताता हूँ कि C कैसे लेके आए हैं वो लोग. तो उन्होंने क्या किया? They said root of -18 into root of -50 can be written as root of -18 into root of -50. This is nothing but +900 and hence 900 का जब अंडर रूट लेंगे तो 30 आया. राइट? ऐसे निकाला जिनका C आया. प्लस माइनस करके बोले. हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला क्षितिज ने. तो क्षितिज, अंडर रूट का जो कॉन्सेप्ट है, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड, एसएटी के लिए जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे आपको सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है उसका. अगर नहीं बोला गया है तो कोई नेगेटिव रूट को कंसीडर नहीं करना है. तो ऐसे आपने 30 निकाला. इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एक छोटा सा क्वेश्चन में आपने एरर कर दिया. बताओ इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है? Why you cannot do this?
because you cannot do this because the numbers given to you, ये आपने जो रूल लगाया ये आपने रियल सिस्टम का रूल लगाया, अर्थमेटिक में जो रियल सिस्टम्स होते हैं आपने उसका रूल लगाया, जबकि गिवन क्वेश्चन में दिस इज नॉट रियल नंबर्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, I root 18 into I root 50। अब इसका ये वाला पार्ट would be written as I square into 900। I square is nothing but -1 and root of 900 is 30। Answer would be -30। ये इसलिए नहीं कर सकते गाइस क्योंकि ये रियल सिस्टम में ट्रू होता है, बट गिवन नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। तो पहले उसको उसके फॉर्म में लेके आओ और जब आप इसको सॉल्व करोगे, हेंस एक्सेप्टेबल आंसर इज ऑप्शन ए था शायद, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलो विद दिस वी कम डाउन टू एंड। जो क्वेश्चंस बच गए, प्लीज मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स, and in next class maybe Uday sir will help you out if there is any doubt. He is taking your next class and he'll be doing chapter 6। ठीक है, for Nilanjan, Kim, Chinmay और अगर कोई और है जिनका कुछ पार्ट बचा हुआ है, we'll be doing a makeup soon, finding out a common time between you and the faculty member, either me, Uday or Anubhav sir would take that। फिर हम आपका क्लास शेड्यूल करते हैं for making up on all that you have lost। टेस्ट जरूर लिखना, चैप्टर 2 टेस्ट नंबर 2 होगा, इनइक्वालिटीज पे टेस्ट होने वाला है आपका, वो टेस्ट आप ग्रेड स्कोप पे या खारगर में जरूर लिखना। एंड विद दिस आई ऑल्सो वांट टू थैंक